these basic signals, and we have covered these. I think four different type of signals were covered in the last class. That is unit impulse function, then unit step function, DT unit step function, and CT signal functions. So these functions were covered in the last class. So we will continue with this particular discussion. Next is the DT signal function. So DT signal function is the same as that of CT signal function. Only in this case, we do not have any ambiguity at at n is equal to 0, right? So signal function in discrete domain can be written as its value is equal to 1 for n greater than 0. For n lesser than 0, its value is equal to -1. So far, it is same as that of CT signal. If you again, if we have a look at the CT signal function, it says that the signum t is equal to 1 for t greater than 0 and -1 for t lesser than 0. At t is equal to 0, we have certain ambiguity. The magnitude can it can be equal to +1 or it can also be equal to -1. Whereas in case of DT signal, because it is discrete in nature, that ambiguity is resolved in this particular case, and at n is equal to 0, we can say that the magnitude of the signal is equal to 0. So this is the difference between the CT and DT signal. So this will you can say that this is very similar to the case of unit impulse function in CT and DT. जो उसमें differentiation था वो इसमें भी differentiation आगे चल के आ रहा है. Next is the CT ramp function. This is also a very popular function, and it is also known as sometimes as test signal. So the symbol used is R as a function of t, and the mathematical expression is that R as a function of t is equal to t for t greater than or equal to 0, and for t lesser than 0, it is equal to 0. So this is a graphical sketch of ramp signal. ये आपने पहले भी पढ़ रखा होगा फिजिक्स में भी, और मे बी फर्स्ट ईयर में भी आपने देखा हो इस सिग्नल को. तो R of t versus t, it is a kind of a straight line graph. Y is equal to mx plus c, and it is its value, that is the magnitude of ramp signal on the y-axis, is same as that of the value of the signal time domain parameter. Right? When t is equal to 1, amplitude is 1. When t is equal to 2, amplitude is equal to 2, and so on. Then we have a DT ramp function. It states that R of n is equal to n for n greater than 0 or greater than or equal to 0, and 0 for n lesser than 0. So it is very same as that as of that of you can say that the CT ramp function, and we do not have much difference between RT and Rn, except that Rn is defined for a discrete instance, whereas RT is defined as for a continuous instance. So next is CT exponential function. ये भी आपने पहले देखा होगा, काफी पॉपुलर सिग्नल है, इसको भी टेस्ट सिग्नल बोलते हैं. Mathematical expression is equal to x as a function of t equal to a, where a is a kind of a scalar factor. Generally, the value of a, you will find that the value of a is in most of the numerical problem will be equal to unity. So x of t is equal to capital A e raised to power alpha into t. Right? Now the graph of this exponential function depend upon the sign of alpha. If alpha is greater than 0, then its graph is increasing with respect to the time, or we generally say that exponentially increasing function. When alpha is lesser than 0, its graph is decreasing function with respect to time. And when we have alpha is equal to 0, then we have a constant slope, right? A straight line graph with the constant with 0 slope, or you can say that a line which is parallel to the x-axis. So this is the exponential function. So we have exponentially increasing function or exponentially decreasing function. So these are the two most popularly used function, that is exponentially increasing and exponentially decreasing function. Exponentially increasing function its magnitude is keep on increasing with respect to the time, and it tend to approach infinity. Whereas exponentially decreasing function or decaying function tend to approach 0 as t approaches infinity. So this is the difference between the exponentially decaying and exponentially increasing function. Then is DT exponential function, very similar to the CT exponential function. So it is also a exponentially increasing function if the value of alpha is greater than 1, that is x of n is equal to a into alpha raised to power n. And x of n
for alpha lesser than 1 or alpha between 0 and 1, it is a decaying function with respect to the time, right? So similar to the CT exponential function, we have exponentially increasing function where the magnitude approaches infinity as n approaches infinity. And in a case of exponentially decaying function, the magnitude approaches 0 as n approaches infinity. Then there is one more function which is known as rectangular function. Because of its shape, it is known as rectangular shape function. So this is the shape of the rectangular function. It exists between two different instants. It can be both-sided function. That is, it may have some portion in the negative side and some portion on the positive side. It can also be completely a right-sided signal, or it can also be completely a left-sided signal. Similarly, we have a rectangular function for the in case of discrete domain. So next is CT triangular function. So CT triangular function, as the name specifies, that it is a triangular function. It has a triangle kind of a shape, and it is defined with the help of a mathematical expression, that is x of t is equal to 1 minus mod of t, where t is between -1 to +1. Right. So if you substitute the values, for example, say if t is equal to -1, then mod of -1 is +1. So 1 minus 1 will be equal to 0. At t is equal to 0, the magnitude of 0 will be 0. 1 minus 0, its magnitude will be equal to 1. Otherwise, for rest of the values, it is equal to 0. Similarly, you can also check by substituting positive value of t also. When t is equal to 1, it will mean 1 minus 1, that is equal to 0. So this is how we define CT rectangular function. Then we have a CT sinc function. So this CT sinc function plays an important role. It is a kind of a unique function which will be found. You can say that very often in case of signals and systems. So this is known, the mathematical description of sinc function is sinc t is equal to sin pi t divided by sin pi t. ये भी आपने +1 +2 मैथमेटिक्स में देखा होगा, इसको जनरली sin theta by theta लिखते होते हैं, right? Or sin pi t divided by pi t. So this is a graph of a sinc function, right? So it has certain harmonics, where harmonics are keep on decaying with respect to the time. Its amplitude is keep on decaying with respect to time on the both on the right hand side, on the left, and also on the left hand side. So this is a sinc function. We will discuss this sinc function later on while doing the chapter number 3 and 4 on Fourier transform, where we will see that this function is the most appropriate function, and we try to achieve our answer to any numerical problem in the terms of sinc function. So this is all about the basic signals, 12 basic signal. Next is the classification of CT and DT signal, right? So how can we classify different CT and DT signals? So first is finite and infinite duration signal. ये आपको काफी clear होएगा आपसे कि finite or infinite duration. So finite duration, when we say that finite duration, it means the signal exists only for finite duration. For example, say if you say the signal exists for t between -5 to +5, then it is a finite duration signal. Similarly, when you say that the signal exists for n between -m to +m, then it is again a finite discrete sequence. Now, what is infinite sequence? Infinite sequence or infinite duration signal is when you write, say, xt is equal to a into e raised to power alpha t. That is exponentially increasing or decaying function. So depending upon the sign of alpha, right? So that is a kind of an infinite duration signal, right? Similarly, u of n, that is a unit step function in discrete domain, is also an infinite signal. U of t is also an infinite duration signal. R of t is also an infinite duration function. Sinc t is also a infinite duration signal. So this is about finite and infinite duration. I hope it is clear to you because it is very basic thing. Next, we move to the one of the important classification of CT and DT signal, that is known as causal and non-causal signals, right? So this definition, that is the second type of classification of CT and DT signal. It plays an important role
in defining the behavior or the characterization of signals and systems. So what is causal and non-causal signal? A causal signal is defined for t greater than 0, right? Any signal which exists for t greater than 0 is known as a causal signal. And any signal which exists for or which does not obey this property is known as non-causal signal. So what is causal? Any signal, whether it is a discrete time signal or a continuous time signal, if it exists for n greater than 0 or t greater than 0, then it is known as a causal signal. For example, this is a causal signal. It will be right-sided signal because the mathematical expression says that it exists for the positive values of t or positive values of the n, right? So that's why it is known as a causal signal. For example, this is a anti-causal signal because it exists for t lesser than 0. It is a left-sided signal. So that's why it is known as anti-causal. A non-causal, this anti-causal signal is also kind of a subset of a non-causal signal, right? ये भी एक तरह का नॉन कॉजल सिग्नल ही है. ये भी नॉन कॉजल सिग्नल है because it exists for both positive as well as negative values of the time parameter. So this is the difference between causal and non-causal signals. Then periodic and aperiodic signal. This is again very common definition. Any signal which obeys the property that is xt is equal to xt plus capital T for t lesser than for t between -70 to plus infinity, then it is known as a periodic signal. Any signal which repeats itself after a fixed interval of time, right? That type of signal is known as periodic signal. And the minimum time interval after which the signal repeats itself is known as the time period of the signal. So this word or the prefix that we are adding, minimum, it plays an important role, right? Because if you see a periodic signal, then the periodic signal can repeat itself after twice of t, thrice of t, and similarly nt, right? So it means आप कोई भी fragment ले सकते हो define करने के लिए time period. तो periodic signal में इस ambiguity को दूर करने के लिए पहले ही एक word prefix कर दिया जाता है minimum time period. That is the minimum time interval after which the signal repeat itself is known as a periodic signal. Any signal which does not satisfy this property is known as aperiodic signal. The mathematical expression for the time period is equal to t is equal to, that is capital T is equal to 2 pi divided by omega naught, right? Generally, we use two type of symbols. One is this particular symbol that is which is represented as a W subscript O, right? And then there is a scientific symbol that is which is all under the Roman category, that is omega subscript naught, right? So ये दोनों symbol omega naught और omega note in Roman जो है वो दोनों ही यूज होते हैं. ज्यादातर बुक्स में इसको डिफरेंशिएट किया गया है कि एक को डिजिटल के लिए यूज करते हैं और दूसरे को जो है वो एनालॉग के लिए यूज करते हैं. तो ये डिफरेंस जो है इसमें. So this is the about periodic and aperiodic signal. Now discrete time signal is also can be categorized as periodic and non-periodic. The characterization or the definition of for DT periodic signal is that if any signal repeats itself after a fixed time interval, that is say capital N, which is the minimum time interval after which it is repeating, then it is known as a discrete time periodic signal, right? So instead of capital T, now we are using a symbol capital N. So if any signal obeys this equation, that is x of n is equal to x of n plus capital N, then that type of signal is known as discrete time signal, and it has said to be periodicity. Now there is some difference between when you say that CT periodic signal and DT periodic signal. So ये भी आप अभी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं, आपको काफी अच्छे से क्लियर होगा. पहला डिफरेंस जो है कैपिटल T can take any value. That is, if you have a CT periodic signal, then the time interval or the time period can take any value.
right? It can be equal to 5.5, it can be equal to 5.9, it can be equal to 6.0, it can be equal to pi by 2, right? Any value can be assumed by the time period in periodic signal. Whereas in case of DT signal, the capital N, that is the time period of the signal, it has to be an integer value, because DT signal DT signal carry its characteristic or behavior, or inherent its characteristic or behavior, because of its integer property. That is, the x-axis value has to be some will have only integer values, and non-integer values are non-permissible. तो dt में ये capital N जो है वो integer value ही ले सकता है, right? Second thing, if for a CT signal, the periodic signal having a angular frequency of omega naught can be related with the time period as t is equal to 2 pi divided by omega naught. Whereas in case of DT signal, omega naught, that is angular frequency, in this case have a relationship with the time period as capital N is equal to 2 pi divided by omega naught multiply by small m. So अब में से कौन बताएगा कि ये small m क्यों लिख रहे हैं हम इसमें? Yes, anyone? Why we are writing small m? That is capital N is equal to 2 pi divided by omega naught into small m. तो ये small m just scaling factor क्यों ऐड किया जा रहा है इसमें? Yes, anyone? Nishant, 71 roll number. सर इंटीजर लाने के लिए. इंटीजर लाने के लिए, एग्जैक्टली सर. सो 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट. ओमेगा नॉट जो है इसमें अगर आपके पास सपोज करो कि टाइम पीरियड जो है अगर आपका सपोज किसी सिग्नल का 5 है, राइट? 5 इज अ परमिसिबल वैल्यू, इट इज एन इंटीजर वैल्यू. तो क्या जो आपके पास जो है वो सपोज करो ओमेगा नॉट की वैल्यू जो है 5 है. ओमेगा नॉट इज एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन डिस्क्रीट डोमेन. आप इसको रेडियन पर सेकंड में डिफाइन कर सकते हो. अब ओमेगा नॉट की वैल्यू अगर 5 है तो कैपिटल एन बन जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 5, राइट? नाउ 2 पाई डिवाइडेड बाय 5 इज अ नॉन इंटीजर वैल्यू. Capital N has to be integer value, so we require some scaling factor, that is small m. So small m will be say if you assume that small m is equal to 5, then it will become 2 pi divided by 5 multiplied by 5, right? So in this way 2 pi divided by 5 multiplied by 5 will be a kind of a integer value. So 5 will get cancelled out and you will get sorry, इसको फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं. So capital N has to be some integer value. Say it is 2 pi divided by omega naught, where omega naught is the angular frequency, and let us assume that omega naught is equal to 5 pi, right? ये omega naught की वैल्यू जो है 5 pi है, क्योंकि omega naught हम लिखते हैं 2 pi into n, right? तो 2 pi into n means आपके पास जो है वो जो omega naught की वैल्यू है वो 2 pi divided by n जो है वो पाई की टर्म में ही आएगा. So let us say that omega naught is equal to say 5 pi है, तो पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद 2 by 5 बच जाएगा. Now 2 by 5 is a non-integer value, right? So if 2 by 5 is a non-integer value, it means that we have to convert it back into integer value. So we require some scaling factor. So small m plays that particular role, that it convert a non-integer value into an integer value. So 2 pi divided by 5 pi, that is 2 by 5 multiplied by 5 will be equal to 2. That is an integer value. So this is the one of the very important difference between the discrete time periodic signal and the continuous time periodic signal, right? Then there is a third point which can be experienced only with the help of waveform. So try to have a look at the different waveforms of periodic and non-periodic, periodic CT signal and periodic DT signal, and then you will be able to differentiate between the waveforms. So third point say that sin omega t has a unique waveform for each value of the time period, whereas in case of discrete time signal, sin omega naught is equal to sin omega naught plus 2 pi. We have to add this 2 pi to get the same kind of a waveform. So at this stage, it is difficult to understand, but once you will see, have a look at the waveforms, then you will be able to create a difference between these two set of signal. For example, point number 2 पे वापस जाते हैं.
अगर m का वैल्यू 5 है, इट मींस इसका मतलब ये रहेगा कि अगर m का वैल्यू 5 है और आप 2 पाई डिवाइडेड बाय 5 पाई को 5 से मल्टीप्लाई करके इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपको वही स्मॉल m ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे? यहाँ तो फॉर्मूले में लिख दिया कि 2 पाई डिवाइडेड बाय 5 पाई इट इज इक्वल टू 2 बाय 5 नॉन इंटीजर वैल्यू, सो लेट अस मल्टीप्लाई इट विद 5 सो दैट इट बिकम इंटीजर वैल्यू। ये उसमें कैसे होएगा, वेव फॉर्म में कैसे रिफ्लेक्ट होएगा? सो अगेन आप में से कोई बता सकता है कि वेव फॉर्म पे जब ये 5 कैसे अकोमोडेट करेंगे हम, जो स्मॉल m है? यस एनीवन? रोल नंबर 80 प्रियांश। प्रियांश रोल नंबर 105 सौरभ। 104 संजीव। 109 शिवम। 103 संगीता। यस सर। यस हाँ जी संगीता बताइए, ये जो n इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 5 पाई मल्टीप्लाई बाय 5 बोल रहे हैं, तो स्मॉल m या 5 का वैल्यू आप वेव फॉर्म में कैसे अकोमोडेट करोगे? सर नहीं पता। Okay. So let us try to understand what is the meaning of this small m. So suppose if we have a discrete time signal, कोई हमारे पास discrete time signal है और उसको हम प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर आप इसको साइन वेव से कंपेयर करो, ठीक है, तो ये साइन वेव तो बन रही है, कंटिन्यूअस डोमेन में बन रही है ना, साइन वेव बन रही है, बट पीरियोडिसिटी नहीं आ रही। पीरियोडिसिटी सेज दैट द सिग्नल रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे इसका वैल्यू 1 है, यहाँ पे मान लो 3 है, इधर 2 है, इधर -1 है, फिर -2 -3 आ गया, यहाँ पे 1 वापस नहीं आया, 0 आ गया। तो हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो चुका हुआ है, बट हमारे पास पीरियोडिसिटी नहीं आई। तो सपोज करो हम स्मॉल m का वैल्यू 5 बहुत बड़ा हो जाएगा, 2 अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे प्लॉट करने के लिए। तो मैं 2 अज्यूम करता हूँ, यहाँ 3 के आसपास अज्यूम करेंगे, हम देखते हैं कैसी वेव फॉर्म बनती है। देखो ये देखो, इसमें 1 2 ये पूरा साइकिल हो गया, ये दूसरा साइकिल स्टार्ट हुआ, यहाँ पे जाके पीरियोडिसिटी रिपीट हुई है सिग्नल की, राइट? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, so we require 2 cycles, so this is small m। ये सीटी सिग्नल में नहीं होता, सीटी में जो है वो पहले साइकिल पे ही कंप्लीट हो जानी थी कंटिन्यूटी, यहाँ पे कंटिन्यूटी जो है वो, और या फिर सॉरी पीरियोडिसिटी जो है वो पूरा साइकिल एक ले गया, फिर दूसरा साइकिल लिया, यहाँ पे जाके कंप्लीट हुई है। तो यहाँ पे स्मॉल m का वैल्यू 2 होगा इस केस में, बिकॉज इट हैज टेकन अस 2 साइकिल्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ्स, दैट इज प्लस एंड माइनस। So this is plus half, this is minus half. I hope you understand the difference between positive half and negative half. So these are the positive half, these are the negative halves. So it has taken us 2 cycles of 6 samples each to complete the periodicity. So this is small m. यही चीज यहाँ पे बताई गई हुई है कि यहाँ पे sin ओमेगा नॉट n should be equal to sin ओमेगा नॉट प्लस ट्वाइस पाई। यहाँ पे ओमेगा t जो है वो हर वैल्यू के लिए एक यूनिक वेव फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। जैसे मान लो साइन, मैं बोलता हूँ साइन पाई बाय 2 इंटू टी, राइट? तो उसके लिए एक वेव फॉर्म बन जाएगी, आप बना सकते हो। फिर मैं बोलूँ साइन पाई बाय 4 इंटू टी, उसके लिए भी कंटिन्यूस वेव फॉर्म बन जाएगी, उसका भी टाइम पीरियड निकल आएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाता। यहाँ पे अगर आप बोलो साइन पाई बाय 4 इंटू एन, अगर वो पीरियोडिक है
ठीक है, पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि कैपिटल एम पीरियोडिक कितने साइकिल्स के लिए आता है, स्मॉल एम की कितनी वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद साइन पाई बाय 2 इंटू एन जो है उसके लिए स्मॉल एम की कितनी वैल्यूज है, कितने साइकिल्स लग रहे हैं। तो हर सिग्नल के लिए साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 4 उसका वेव फॉर्म जो है वो चेंज होता जाएगा डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द स्मॉल एम। यहाँ पे ऐसा नहीं है, चाहे आप साइन पाई बाय 4 इंटू टी चाहे साइन पाई बाय 2 इंटू टी की वेव फॉर्म बनाओ, उसने एक साइकिल में ही पीरियोडिसिटी अचीव कर लेनी है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाता। सो आई होप द डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट नंबर 3 एंड 2 जो हमने अभी डिस्कस किया है सीटी या डीटी ये क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सर डीटी में आपने जो साइन वाला बताया वो फिर से बता दीजिए। फर्स्ट लूप में मतलब क्यों कंप्लीट नहीं हो रहा है। ठीक है, और कोई किसी ने पूछना हो? सर सेकंड वाला का एग्जांपल से बता देते तो ज्यादा बेटर होता। तो एक बार फिर से बोलना, आवाज कम थी पंकज। सर मैं बोल रहा हूँ कि डीटी वाला का एग्जांपल से बताते तो बेटर रहता। ये वेव फॉर्म जो बना रखी है एग्जांपल ही है। नहीं सर, मतलब एक डाटा के साथ में। डाटा के साथ में भी ट्यूटोरियल में हम डिस्कस कर लेंगे। एक बार मैं यहाँ पे फिर से स्केच करता हूँ। ओके। ये पीरियोडिक वेव फॉर्म है, ठीक है, ये क्लियर है। एक पीरियोडिक वेव फॉर्म है, आगे कंटिन्यू रहेगी। पीरियोडिक सिग्नल को हम एवर लास्टिंग सिग्नल भी बोलते हैं। ये -इन्फिनिटी से स्टार्ट होते हैं और प्लस इन्फिनिटी पे खत्म होते हैं। तो पूरा सिग्नल नहीं शो कर सकते होते हम। तो इस तरह से ये सिग्नल वेव फॉर्म है। ये इसका टाइम पीरियड है। ये कैपिटल टी पाई बाय 4 हो सकता है, पाई बाय 2 भी हो सकता है और पाई बाय 8 भी हो सकता है। इसके लिए तो आप एग्री करते हो, ये टाइम पीरियड कोई भी वैल्यू ले सकता है। यस, ये क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है पंकज, युवराज। ठीक है, ये तो कोई वैल्यू ले सकता है, पाई बाय 8 ले सकता है, पाई बाय 4 ले सकता है, पाई बाय 2 भी ले सकता है। ठीक है, कोई भी वैल्यू ले सकता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हो और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब इस केस में जो दूसरा केस है इसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, ये 2 पाई डिवाइडेड बाय सपोज ये 2 पाई की जगह कैसे किया जाए इसको, इस एग्जांपल सेट करने के लिए 2 वैल्यू आ जाए। टू पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट, अगर पाई बाय 2 है पाई बाय 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 तो चलेगा। m2 आए 4, 2 पाई डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये देखते हैं हम। से दिस इज इक्वल टू n, कैपिटल N is equal to 2 pi divided by 4 pi, right? So let us assume that omega naught is equal to 4 pi for the dt signal. So omega naught is the angular frequency. When you substitute omega naught is equal to 4 pi, it will become pi will get cancelled out with pi, right? और जो आपके पास जो बच जाएगा वो 2 divided by 4, that is 1 by 2 बच जाएगा। ठीक है, ये एग्जांपल क्लियर है ना? सपोज ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 4 pi है। So capital N we are finding that is what is the value of the time period. So it will be equal to 2 pi divided by 4 pi. It will be equal to 1 by 2, right? So Yuvraj, ये चीज clear है? Yes sir. Yes. So 2 pi divided by 4 pi, pi will get cancelled out with each other. That is the pi in the numerator and the pi in the denominator term. 2 will get cancelled with the 4 in the denominator term. It will be equal to 1 by 2. 1 by 2. Now 1 by 2 is a non-integer value. We have to convert it to an integer value. So small m has to be taken to be equal to equal to 2. So that 2 multiplied by 1 by 2 will be equal to 1, which is an integer value, right? So the time period will become equal to 1. That is capital N is equal to 1. So we will take 2 cycles of this waveform to complete the periodicity, right? So in this way, you can say that the time period of the signal is equal to it is taking 2 cycles to complete the periodicity, right? Or you can also assume that different sub cases can also be assumed, right? सर 2 साइकिल क्यों ले रहा वही समझ नहीं है।
सो इसमें एक बार फिर से डिस्कस कर देख लेते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा तो। जैसे ये साइकिल है, ये वाला जो साइकिल है, ये साइकिल इस तरह से, ये अगर सीटी सिग्नल होता तो ये तो पीरियोडिक सिग्नल हम बोल देते, राइट? इट कैन बी कॉल्ड एज ए पीरियोडिक सिग्नल इफ इट इज a CT सिग्नल। तो ये आपका CT सिग्नल हो जाता, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1, सपोज दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 3, दिस इज इक्वल टू, एक मिनट, so what is periodicity? Periodicity is where the signal repeats itself after a fixed interval of time. So ये जैसे इसमें सैंपल का वैल्यू, इसका लेट अस अज्यूम दैट दिस सैंपल इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 3, दिस इज इक्वल टू 2, दिस इज 1, दिस इज 3। यहाँ पे अगर 1 आ जाता तो ये हम बोल देते कि ये सिग्नल जो है इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग पीरियोडिक सिग्नल हम इसको कॉल कर देते। बट यहाँ पे सैंपल जो है 0 हो गया तो हम इसको पीरियोडिक सिग्नल अभी इस पर्टिकुलर मोमेंट पे नहीं कॉल कर सकते। तो उसकी अज्यूम करो, उसके बाद सिग्नल का मैग्नीट्यूड फिर इस तरह से जो है हमारे पास आ जाता है 1, 3, 2, -1, माइनस से -3 या -2, फिर 0। तो अब इसमें रेपिटेशन आ गया, ये पूरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 के 6 सैंपल फिर से रिपीट हो रहे हैं। So this is the time period of the discrete time signal, right? So इसमें साइकिल्स कितने लगे हाफ के, जैसे इसमें पॉजिटिव, एक पॉजिटिव हाफ था, एक नेगेटिव हाफ था। वी हैव टेकन 2 साइकिल्स टू कंप्लीट द फुल टाइम पीरियड। यहाँ पे एक पॉजिटिव हाफ, दूसरा नेगेटिव हाफ, फिर एक पॉजिटिव हाफ और फिर एक नेगेटिव हाफ लगा है। So this signal has taken 2 cycles to complete the periodicity, whereas in this case it has taken only 1 cycle to complete the periodicity, 1 positive and 1 negative. Here it is taking 1 positive, 1 negative, 1 positive, 1 negative. So there are 1 and this is the second cycle. So it has taken 2 cycles to complete the periodicity. So this is the difference between the case of DT periodic signal and CT periodic signal. क्योंकि CT में आपको एक ही साइकिल लगेगा हमेशा पीरियोडिसिटी बताने में, राइट? चाहे आपके पास ये सिग्नल है या फिर आपके पास अज्यूम करो आपके पास ये सिग्नल है, एक और एक सिग्नल हम इसमें स्केच कर लेते हैं। सो एक ये सिग्नल है हमारे पास, दिस इज अ सेकंड सिग्नल, इसमें भी एक ही हाफ लगा है, इसका टाइम पीरियड इससे ज्यादा है, राइट? बट इसमें भी एक ही साइकिल लगा है, 1 पॉजिटिव हाफ एंड अनदर इज नेगेटिव हाफ। सो ओनली 1 साइकिल हैज बीन कंज्यूम्ड। तो आप CT सिग्नल्स की जितनी मर्जी एग्जांपल्स ले लो, ठीक है, जितना मर्जी एग्जांपल्स लेते जाओ, उसमें पीरियोडिसिटी जो है वो एक साइकिल ही लेगी, दैट इज प्लस हाफ एंड नेगेटिव हाफ। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें जो है एक साइकिल भी ले सकती है, एक से ज्यादा साइकिल भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ स्मॉल m, कि स्मॉल m जो है वो कितना वैल्यू हमें चाहिए, सो दैट वी कैन कन्वर्ट ए नॉन इंटीजर वैल्यू into an integer value, right? So I hope now it will be clear to you, Yuvraj, Pankaj. Yes, Yuvraj, Pankaj. ये क्लियर है अभी? Yes, sir. युवराज, यस सर। पंकज, यस सर। सर तो इसमें n के कारण जो मतलब पोजीशन चेंज हो रहा है क्या ग्राफ का? ग्राफ के साइकिल्स कंज्यूम से ज्यादा होंगे, पोजीशन कैसे आप बोल सकते हो? पोजीशन तो वही मैं पूछ रहा, साइकिल ज्यादा क्यों हो रहा है सर? हाँ जी, साइकिल मतलब ज्यादा क्यों हो रहा है? साइकिल इंटीजर बनाने के लिए,
जैसे हमने एग्जांपल लिया था 2 पाई डिवाइडेड बाय 4 पाई, तो उसको अगर आप सॉल्व करोगे तो वो 1/2 आ जाएगा। नाउ कैपिटल एन पहले ही हम बोल रहे हैं, जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है उसमें हम बोल रहे हैं कैपिटल एन हैज टू बी एन इंटीजर वैल्यू। ये जो पॉइंट बोल रहे हैं हम, कैपिटल एन हैज टू बी एन इंटीजर वैल्यू, राइट। सो ये कैपिटल एन इंटीजर वैल्यू ये होने का तभी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बनेगा, अदरवाइज वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल नहीं बनेगा, क्योंकि 1/2 इज इक्वल टू 0.5। So 0.5 is a non-integer value and non-permissible according to the definition or assumptions of the discrete time signal. So 2 pi divided by 4 pi, which is equal to 1/2. So to convert that 1/2 into integer value, we require that small m should be equal to 2. So that 1/2 multiplied by 2 will get cancelled out, and you will get the time period of the signal is equal to 1 in this case, right? Similarly, आप ये भी assume कर सकते हो कि अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू होती, मान लो आपके पास 2 पाई डिवाइडेड बाय 5 पाई होता, ठीक है ना, तो उसमें पाई कैंसिल आउट हो जाना था, आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 5 लगने थे। यहाँ पे स्मॉल एम की वैल्यू 5 आ जानी थी और कैपिटल एन जो है वो 2 आ जाना था। दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ द सिग्नल। इस तरह से जो है मे बी अभी तो मैंने इसका न्यूमेरिकल जैसे हम ट्यूटोरियल डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें मैं वेव फॉर्म्स जो है बुक से कुछ लेके रखूंगा आपको क्लियर करने के लिए और ज्यादा कि कैसे जो है वो साइकिल जो है वो हम काउंट करते हैं। अभी के लिए जैसे जो वेव फॉर्म बना रखी है उसमें 2 साइकिल्स लग रहे हैं। एक 2 साइकिल्स मींस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हाफ मिलके एक साइकिल बनाता है। सीजी सिग्नल्स में हमेशा ही जितना मर्जी टाइम पीरियड हो वो एक ही साइकिल लेगा, ठीक है ना, रिपीट इटसेल्फ। कोई भी सीटी जैसे साइन वेव नहीं, कोई भी पीरियोडिक सिग्नल हो, अगर आपके पास मान लो ये ट्रायंगुलर सिग्नल है, ये इस तरह का जो अपने आप को रिपीट करता जा रहा है, ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर वेव फॉर्म जो है अपने आप को रिपीट कर रही है, इसका टाइम पीरियड ये हो गया, ठीक है। तो इसमें भी एक ही साइकिल लगा, एक राइजिंग और एक फॉलिंग, राइजिंग फॉलिंग, राइजिंग फॉलिंग, राइट। तो कोई भी चाहे इसकी जगह आप एक सीटी सिग्नल रेक्टेंगुलर पल्स फॉर्म ले लो, जैसे ये रेक्टेंगुलर पल्स वेव फॉर्म है, ठीक है, इस तरह की रेक्टेंगुलर पल्स वेव फॉर्म है। इसमें भी जो टाइम पीरियड है वो क्या रहेगा, ये यहाँ से स्टार्ट होएगा और ये इसका टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द टाइम पीरियड आफ्टर विच द सिग्नल इज रिपीटिंग इटसेल्फ। सो इसमें भी एक ठीक है, प्लस ये आपका जो है ये प्लस लेवल है और ये नेगेटिव लेवल है, ठीक है, जहाँ हाई लेवल है या लो लेवल है, तो एक हाई लगा एक लो लेवल लगा, एक ही साइकिल लगा। टीटी सिग्नल में एक साइकिल या एक से ज्यादा साइकिल लग सकते हैं टू रिपीट टू हैव अ periodicity or to repeat its characteristic after a fixed interval of time। तो उसमें एक से ज्यादा साइकिल लग सकते हैं, मींस प्लस हाफ माइनस हाफ अगेन प्लस हाफ माइनस हाफ, राइट, टू रिपीट द periodicity ऑफ द सिग्नल। क्योंकि हमें यहाँ पे periodicity नहीं मिल पा रही थी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमने और ज्यादा सिग्नल को जूम करके या फिर आप बोल सकते हो कि एक्सपैंड करके नेक्स्ट सैंपल्स भी पिक कर लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रोड्यूसिटी नहीं मिली, तो कुछ आगे चल के और देखते रहे सैंपल, तो यहाँ पे जाके प्योरिसिटी मिल गई, ठीक है। तो इसमें ये इसका टाइम पीरियड तो आ गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो सिग्नल रिपीट कर रहा है अपने आप को, ये 0 आ गया, इसके बाद ये फिर से 1 आ जाएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका टाइम पीरियड आ गया जहाँ पे सिग्नल फिर से अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर गया, ठीक है। बट इसने टाइम साइकिल्स कितने लिए, इट हैज टेकन 2 साइकिल्स टू रिपीट द सिग्नल, राइट। 3 भी ले सकता था, 5 4 भी ले सकता था, 5 भी ले सकता था, 7 भी ले सकता था साइकिल्स, पर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स में हमेशा जो नंबर ऑफ साइकिल्स हैं वो 1 साइकिल ही रहेगा, एक साइकिल के बाद जो है सिग्नल रिपीट कर जाएगा, ठीक है, चाहे कैसा भी मेनली मैं यही पूछ रहा हूँ कि मतलब इसमें पता कैसे चलेगा कि 2 साइकिल या 3 साइकिल तो एम से रिलेटेड है ना वो सिग्नल कैसे डिफाइन करते हो, हाउ यू डिफाइन अ पीरियोडिक सिग्नल? सर जो रिपीटेड हो, मतलब जैसे पहले चेक करनी है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की वो कहाँ रिपीट हो रही है, ठीक है। जैसे इस पर्टिकुलर वेव फॉर्म में इस एग्जांपल में हमने देखा कि एक यहाँ पे सिग्नल स्टार्ट हुआ 1, सपोज दिस इज इक्वल टू 1, ये 3 है, ये 2 है, ये -1 आ गया, ये -3 आ गया, ये 0 आ गया, तो अभी तक रिपीट नहीं हुआ, फिर 1 आ गया, ठीक है, 1 के बाद 3 आ गया, ठीक है, ये आपका फिर 2 आ गया, ये इस तरह से सिग्नल जो है वो चलता जा रहा है, यहाँ पे जाके 0 आ गया, फिर 1 आ गया। तो ये 0 पॉइंट जो है ये हमें बता रहा है कि सिग्नल जो है अपने आप को सभी सैंपल जो हैं
वो रिपीट कर गए 1 3 2 1 -1 -3 0 1 3 2 -1 -3 0 राइट। अब जितने भी सैंपल्स आ रखे थे उन्होंने सभी ने रिपीट कर लिया है। ये भी एक बार आ गया यहाँ पे, ये एक बार यहाँ पे आ गया, ये जो सिग्नल है यहाँ पे आ गया, ये जो है यहाँ पे आ चुका है, ये जो सिग्नल है यहाँ पे आ चुका हुआ है, और ये 0 जो है यहाँ पे आ चुका हुआ है। इट मींस every element in the discrete time signal or every sample has repeated itself at the end of this particular moment, right? So we will call this signal, this is the time period of the signal, right? So जहाँ पे सिग्नल जो है अपने आप को रिपीट कर दे उसी को हम periodicity बोलते हैं या टाइम पीरियड बोलते हैं। जैसे ये 0 से स्टार्ट हुआ, इंक्रीज हुआ, मैक्सिमा पहुंचा, फिर नेगेटिव में मिनिमा पहुंचा और फिर 0 आ गया, उसके बाद फिर से इसने ऐसे चलना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो आपका सिग्नल जो है इसका टाइम पीरियड ये हो गया, जैसे इसका टाइम पीरियड ये हो गया, इसका टाइम पीरियड ये हो गया, ठीक है, इसका टाइम पीरियड ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमें चेक करना है कि कहाँ पे सिग्नल रिपीट कर रहा है। सीटी सिग्नल में एक ही साइकिल लगेगा, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। डीटी सिग्नल में हो सकता है कि आपको एक प्लस हाफ, माइनस हाफ, प्लस हाफ, माइनस हाफ, इस तरह से ज्यादा प्लस हाफ और माइनस हाफ लग जाएं टू चेक द पीरियोडिसिटी ऑफ द सिग्नल। तो ये चीज है। तो युवराज आपको अभी क्लियर है? तो हम प्रॉब्लम जब डिस्कस करेंगे ना तो उसमें वेव फॉर्म्स भी आएंगी। मैं नेक्स्ट टाइम जो ट्यूटोरियल शीट बनाऊंगा उसमें ये ख्याल रखूंगा कि ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रहे डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल के जिसमें एक से ज्यादा साइकिल जो है लग रहे हैं। बुक में भी आपको मिल जाएंगे, पर मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल शीट में इसका ख्याल रखूंगा कि आप लोग जो है वो इस तरह के सिग्नल जो उसमें रहे हैं, डीटी सिग्नल जो एक से ज्यादा साइकिल ले रहे हैं, ठीक है। Okay, sir. So this is about the classification of periodic and aperiodic signals, which is an important classification. So in next class we will continue with the further classifications of CT and DT signals, that is especially energy and power signal, then deterministic and non-deterministic signals. तो ये हम सब चीजें नेक्स्ट क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे। So okay, thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir.